अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पीपीएससी की डेली डोज के बारे में देखेंगे। एक एमसीक्यूज होगा उसमें जो कि जितने कीवर्ड्स होंगे उसके बाद में कुछ यानी कि शॉर्ट एमसीक्यूज टाइप्स इंफॉर्मेशन हम लेंगे। तो पहला जो हमारा है, विच रीजन डज द सिंदूर पास कनेक्ट विद चित्राल। तो इसका ऑप्शन कर दूं, स्वात, गिलगित बल्तिस्तान, मरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गिलगित बल्तिस्तान। अब हम देखते हैं इसमें से जो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। एक तो है शंदूर पास। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं शंदूर पास के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। शंदूर पास इज लोकेटेड इन पाकिस्तान हिंदू कुश माउंटेन रेंज। यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन में इट कनेक्ट चित्राल डिस्ट्रिक्ट विद गिलगित बल्तिस्तान। शंदूर पास is situated at altitude of approximately 3,700 meters और इसका जो फीट में है वो है 12,139 फीट है अबव सी लेवल। तो ये तो हमारे पास एक एमसीक्यूज आ गया, ये एमसीक्यूज आ गया। ये कहाँ पे लोकेटेड है? हिंदू कुश माउंटेन में। तो इसका रिनोड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सिंदूर पास होस्ट ऑफ द एनुअल सिंदूर पोलो फेस्टिवल। एक हमारे पास ये आ गया एमसीक्यूज। द रीजन अराउंड द पास इज नोन फॉर इट्स डिवर्स फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा एंड फ्योना। तो ये हमारे पास दूर के बारे में जो थोड़ी सी डिटेल है वो आगे साथ। अब दूसरा चित्राल। चित्राल के बारे में पढ़ते हैं। चित्राल डिस्ट्रिक्ट इन खैबर पख्तूनख्वा। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, द शेयर बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान टू द नॉर्थ एंड वेस्ट। चित्राल किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? अफगानिस्तान टू द उसके नॉर्थ और वेस्ट के। known is a stunning natural beauty and landscape. Chitral is home to the famous Clash people. चित्राल में कौन से people रहते हैं? Clash, who have their unique cultures and traditions. The district is surrounded by the Hindu Kush mountain range. चित्राल और सिंदूर का जो एरिया वो किसमें है? हिंदू कुश माउंटेन में। ये हमारे पास आ गया। आगे गया ये हमने स्कर्दू में पढ़ा था। ये ऑप्शंस था हमारे पास स्कर्दू, स्वात, बल्तिस्तान एंड मरी। तो हम इधर पहले स्कर्दू से शुरू करते हैं। स्कर्दू क्या आता है? Skardu is a town located in Kazakhstan region, Pakistan. It is situated in the northeastern part of the country. Skardu is known as the gateway to the mighty of Karakoram mountain. वो किसमें था? हिंदू कुश रेंज में था। ये Karakoram रेंज में। The town is nestled at the banks of the Indus River. ये आ गया Indus River. Skardu is a famous for its landscape including lakes, valley and towering peaks. The region is the home of some world highest mountain include K2 and second highest peak in the world. स्कर्दू में कौन सी माउंटेन है? K2 है। स्कर्दू पॉपुलेशन ऑफ द माउंटेनियर्स एंड ट्रेकर्स। ठीक हो गया। आगे नीति 8वां पॉइंट से द टाउन सर्व्स एज द बेस कैंप ऑफ वेस्ट वीक्स इंक्लूडिंग अ फेमस Concordia and Balatoria Toria glaciers. Number 9 points Skadu is a rich in cultural heritage with a Tibetan, Balti and Islamic traditions. In the town has a historic significance for such as the famous Kharpocho Fort। ठीक है ना, Kharpocho Fort। आ गया गिलगित। अच्छा, गिलगित के बारे में रीजन इन दी नॉर्थर्न पाकिस्तान। गिलगित के administrative region, it is located in the Karakoram mountain and share border with China। क्या कहता है? चाइना के साथ अफगानिस्तान एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर। हिंदुस्तान को 3 बॉर्डर लगते हैं, चाइना, अफगानिस्तान और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू कश्मीर। हिंदुस्तान इज नोन एज ईस्टर्न स्केम इंक्लूडिंग पीक्स लेक नागा पर्वत। ठीक है, नागा पर्वत है इसमें नाइन्थ एंड हाईएस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड। The region has a natural resource including minerals and hydraulic power potential. Gilbertson is culturally diverse with blend of the various ethnic groups include Balti, Shina and Burusaki.
The region is known as for its vibrant festival tradition, music, and dance forms. Gilbert is a popular tourist destination, attracting visitors, mountaineering, trekking, ancient Silk Road routes. The region is a home of historic landmarks, including ancient Fort Yabchish rock carving and the altered and vaulted forts in Hunza Valley. Yucatan has a rich with unique flora and fauna species, including the snow leopards. The region has strategic importance due to its location serving as a vital trade and transport route between Pakistan and China, though the Karakoram Highway. Okay, हम सीधे आ गए जी मरी के बारे में. Murray is a popular hill station located in Rawalpindi district of Pakistan. It is situated in the Pir Panjal range of Himalayas. यहाँ पे पीर पंजाल range. Murray is known as the for its pleasant weather, especially during the summer months, making it popular tourist destinations. The hill station is located approximately altitude कितना है by 191 meters. कितना है 16 feet above the sea level. Murray is famous for its science beauty, lush green forest views and from the town attract visitors. Education such as hiking and sailing. Murray is known for its colonial area. Architecture and historic landmarks including the Mall Road and icon Murray Bravery. The region experiences heavy snowfall during the winter, making popular major cities of Pakistan, though the road network and is easily accessible from Islamabad and Rawalpindi. The town offers various options ranging from luxury resorts to the budget hotels, catering to the different tourists. ठीक है, ये हमारा एक एमसीक्यू था. एक एमसीक्यू जितने कीवर्ड्स थे उसको हमने डिटेल में पढ़ा है. अब नीचे दूसरा चीज आ गया. To which side of Pakistan in Wakhan corridor located east, west, north, south. तो ये हमारा जो आंसर है वो है नॉर्थ. अब हम इसमें पाकिस्तान के बारे में जो है ये आ गया. इसके बारे में थोड़े से पता है. पाकिस्तान गेन इंडिविजुअल फ्रॉम ब्रिटिश रूल. इधर ये बना है. कैपिटल इस्लामाबाद है. उर्दू इसकी लैंग्वेज है. कराची की मोस्ट पॉपुलर थीम रिटन हफीज जलंधरी ने लिखा था. फीचर ग्रीन फील्ड विद वाइट क्रिसेंट एंड स्टार. द नेशन फ्लावर जैस्मीन birds of the chakor chakor red legend. अच्छा जी. Gidar Chidar national animal marker है. The highest mountain peak is the K2 is known as mountain Godwin Austen. Okay. ये हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए. इंडस रिवर आल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान. River that are desert is also known as Great Indian Desert spans across the part of Pakistan, India. ठीक है. इंडस रिवर longest worth are the Pakistan rupee because this country Pakistan is parliament form of government रिफल भी है. ये इमरान खान ये अब चला गया है. पार्शली फील्ड हॉकी है. The Lord Fort is also known as Shahi Killa is a UNESCO World Heritage Site in Pakistan. The Bashi Mosque is one of the largest mosques in the world. Pakistan is the sixth most populous country in the world. National drink of the Pakistan is sugarcane. Oh, sugarcane. Raw is known as for its cultural heritage and has ethnic groups including Punjabis, Sindhi, Balochistan, and Pashtun. Pakistan has a nuclear weapons, nuclear power. जो 28 मई को हुआ था. द ऑफिशियल न्यू पाकिस्तान इन उर्दू इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान. तो इसमें से जो बाकी हैं. इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज. ईस्ट में. इन विच डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट के बारे में थोड़ा सा मालूमात है. सनसेट वेस्ट. इन विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक needle of compass point north. Which direction is the left of the sun facing northwest, right sun facing east, south. के ये थोड़ी सी मालूमात है इसके बारे में. Which direction commonly associated with the warmth and sunlight? South. Which direction is commonly associated with cool and darkness? North. North and south ये दोनों उल्टे चलते हैं. In direction the north pole is located north. In the south, the in which direction typically associated with the growth and new beginning. East. Induction is typically associated with the ending and reflection. West, east, and west.
अशरफ में मगरब में जाओगे तो डूब जाओगे, ये अखबार के बारे में अखबार ने इसी वजह से कहा था। तो ये हम इसको डेली दिया करेंगे। तो इसमें ये है कि इससे रिलेटेड ही काफ़ी सारे एमसीक्यूज हमारे इसमें से कवर हो जाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह एक पेपर में हमारे काफ़ी ज़्यादा इसकी पीपीएससी की तैयारी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।